Hi, good afternoon, everybody. This is Vishwajit Datta, Director, Success Ed Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. So, welcome to the session once again in the afternoon today. We have recently finished the morning class, and let me tell you very frankly, this is the emotion that I was carrying as I was coming out of the class today. Days are coming closer, and the anxiety, the nervousness, the stress, I could see in the mind of the students. Frankly speaking, I believe this emotion. I have this emotion in my mind that these all uncertainties go hand in hand, particularly when the examination is very near and you are getting closer and closer day by day. Today, the students have finished their mock test papers, and all of a sudden, after their scores, they're getting this kind of emotions. I could read their face, a lot of anxiety, a lot of nervousness in the mind of those students. So I thought, let us discuss it. If all of us put together can create some sort of positive energy, and we can impart to all the students who are writing this year, CLAT 2023 particularly. तो बहुत ही अजीब से सिचुएशन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो बट डाइवर्ट कर सकते हो. तो मुझे लगता है इसको डाइवर्ट करना चाहिए. कैसे करें डाइवर्ट? हाउ टू डाइवर्ट इट? When I was looking to such students, what I was getting in my mind at the first instance, let me tell you. See, there is always a perspective, right? The fundamental decision that you have taken long back, 6 to 8 months back, that I'm going to write this exam, CLAT 2023. You have been preparing for this quite for some time, और all of a sudden आपको इतनी एंजाइटी, इतना रफनेस, इतना स्ट्रेस लग रहा है. तो सच बताऊं कि पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? व्हाट इज द पर्सपेक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बोलना बहुत आसान है, आई डू अंडरस्टैंड दैट. यदि मैं भी उस जगह पर होता है, had I been to that circumstances, I would have felt the same feeling in my mind, in my heart. This is something which is very very inevitable. आता ही है लाइफ में. तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या? हमारा पर्सपेक्टिव बदलना नहीं चाहिए. हमने जो पर्सपेक्टिव बनाया था लॉन्ग बैक, बाय द टाइम वी हैव टेकन दिस डिसीजन दैट विल गो फॉर CLAT 2023, तो वी हैव मेड दैट पर्सपेक्टिव, और वो पर्सपेक्टिव अभी भी बना होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दैट पर्सपेक्टिव. अपने पर्सपेक्टिव में चेंज नहीं करना है अपने को. If we change the perspective, a lot of things are going to change immediately. So we will not change at all our perspective that we are going to make a mark for this exam, CLAT 2023. उस पर्सपेक्टिव को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आपका पर्सपेक्टिव हिलता है ना, तो ये काफ़ी सारा डाउट क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डाउट्स इन योर माइंड. और केवल डाउट्स ही नहीं, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म विद योर पोटेंशियल. आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है उससे आप फाइट नहीं कर पाते हो, और डाउट क्रिएट करता है. लोग आपके आसपास जितने सारे होते हैं, फिर वो आपको देखते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं. जब वो इंटरफेयर करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है. सो वी डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड विद दोस ऑल इमोशंस, बिकॉज वन इंसिडेंस इज गोइंग टू क्रिएट अनदर इंसिडेंस, एंड दीज सीरीज ऑफ incidences are going to impact completely. So for the next 15-16 days that we have in our hand for these exams, we need to adapt a different sort of environment so that we are able to divert all such emotions that are coming into our mind, that may divert, that may create lot of confusions. What will happen to me at this moment of time? क्योंकि वो आ गया तो problems definitely होगा, and in that case we may not be performing with best of our strength and ability. क्योंकि आपके पेपर करने की जो तकनीक है, जो स्ट्रैटेजी है, जो टेक्निक है, जो आपने डेवलप किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस पर भी इम्पैक्ट होगा. केवल ये इम्पैक्ट नहीं होता है दैट चलो मैंने एक मॉक किया अच्छा गया, मैंने एक मॉक किया बुरा गया, अब मैं मॉक अच्छा करूंगा. नहीं होता है. कभी भी कोई भी इम्पैक्ट कैलकुलेटेड नहीं होता है. वो कहीं पर भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है, किसी भी मोमेंट पर कर सकता है. सो ड्यूरिंग द लास्ट 15 days ऑफ टाइम वी नीड टू मैनेज सम थिंग्स इन ए मैनर दैट वी आर एबल टू कोप अप विद ऑल सर्कमस्टेंसेस. क्या कर सकते हैं? डाइवर्ट द इमोशंस. दैट इज द अल्टीमेट गोल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट. If you ask me, this is what
This is what the tool that I would like to give it to you. You have to divert all such emotions. जो आपको आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो प्रॉमिस है, जहां तक आपने जाने का प्लान किया था, वहां तक जाने में जो भी आपको अभी रोक रहा है, उसको आपको डाइवर्ट करना है. सो देर इज नो मैजिक दैट कुड हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं हो सकता है. ऑल ऑफ ए सडन कुछ हो जाए और आप बोलो कि मजा आ गया, मेरे को सब मिल गया, नाउ आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. As the days will go closer, things will become very important for you. Every day, every moment, every second is going to be precious for you. So this is just a calculation of as to how you keep yourself for the next few days, because these days are going to be very very important for you. तो मुझे लग रहा था कि कुछ छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान में रखोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा. पहले तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे आप करते हुए आए हो, maybe you can increase your potential, maybe you can increase your study for some hours, maybe 2 hours a day you can increase. आपका जो भी पोटेंशियल है, आप उसको कितना इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, यू डू दैट. इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज योर पोटेंशियल, योर स्टडी आवर्स, डोंट डू इट, कंटिन्यू दैट. आप उसी को कंटिन्यू करो. आई बिलीव कि आखिरी 15 दिन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता है. एवरीथिंग ऑल दैट यू हैव स्टडीड फॉर द लास्ट सेशन, दैट इज ऑलरेडी बीन being inside you, so that is what is going to come outside on the examination date. तो आखिरी के 15-16 दिन में बहुत बड़ा महज नहीं हो सकता कुछ. तो जिस गति से, जिस स्पीड से, जिस मोमेंटम से आप पढ़ रहे हो, try to keep that momentum. If you feel that you are able to increase 2 hours, 3 hours a day, you can do so. But if you feel that you cannot increase it, just maintain it. मेंटेन करिए. किसी को देख के ओवर स्टडी करने की कोशिश मत करिए. जैसे आप कई बार फ्रेंड्स को देखते हैं दैट कोई बोलता है मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ रोज. तो प्लीज डू नॉट डू एन ओवर स्टडी जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर गाय इज डूइंग द सेम. तो डू नॉट फॉलो एनी बडी ड्यूरिंग द लास्ट 15-20 डेज दैट यू हैव राइट नाउ इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम. तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें करने के लिए. जो भी आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ है, इफ यू थिंक दैट यू आर एबल टू फॉलो दैट, इट्स ग्रेट. इफ यू थिंक दैट naturally you can increase 2 to 3 hours a day, please do that. That is how you can divert all such emotions, all that anxiety, all that nervousness, stress जो आपके साथ अभी हो रहा है. Second, dream about success. Think positive. What does it mean? What is the guiding principle of life? There could be a number of guiding principles for different people. Right now हमारे लिए क्या important है कि हमने ये decision लिया. That was our decision, and our parents, the family members have helped us to take that decision at that moment, and we are continuing with that decision for the last so many months. So the guiding principle right now is that decision that you have taken. So please be with that decision, and that decision is nothing but a key for success. क्योंकि आप सिलेक्ट होगे, आप सिलेक्ट नहीं होगे, इसका डिसीजन ऑलरेडी आपने 6-7 महीने पहले कर दिया था. By the time you had decided that I am going to make one attempt more, I did not get the best what I have prepared last year, so I would like to go for one more time. So that guiding principle has already created a story in your mind that you're going to succeed in the upcoming exam. So please carry that guiding principle कि हाँ मेरे को सक्सेस होने के लिए मुझे एक और अटेम्प्ट देना है. I need to go for one more attempt. That was the guiding principle. वो प्रिंसिपल के कारण आप आगे बढ़े हो. तो प्लीज कीप दिस नोशन इन योर माइंड एवरी टाइम कि मेरे को सक्सेसफुल होना है. आई एम ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस. सो थिंक पॉजिटिव. जब भी आप सोते हो, जब भी आप उठते हो, जब भी आप खाली बैठते हो, नॉट स्टडिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार. इज देयर एनीथिंग दैट यू फील आई हैव लेफ्ट? आपको केवल उसके बारे में सोचना है. ओनली दैट पार्ट ऑफ द प्रेपरेशंस that you have done which could be even make it better, or something that you have left and you could make it better. You have to think about that. That is called as being positive at that point of time. You are still taking a lot of care about what you have done and what you have not done. You are still doing a lot of things in order to make yourself engage with that activity because of that decision, that guiding principle you took long back, 6 months back. आप अभी भी उस पर काम कर रहे हो. So you are engaged yourself completely. Isn't it? So you're taking a positive course of action in bringing that dream into reality. So that is all that you need to think every day. When you get up in the morning, in the afternoon, in the evening, you have engaged yourself completely and you are thinking about that only, and that is called as think positive.
Think positive is not something that I'm going to create something new, bringing in front of you, and then you are looking at it and you are thinking positive. No, that is not happening. You are dreaming about everything that you have decided 6 months back. You are putting all your mind into it, realizing all those potential back into efforts, putting every minute of yours into reality, working on it. That is called as being positive, and you are apparently giving everything of yours into that activity. So bring yourself into that state of mind that I'm going to be successful. I'm going to be successful. Sometimes you're writing test papers, mock test papers, you are getting a score, and you feel that, oh my God, I'm 10 marks less than that of my expectation. I was 15 marks less than that of my expectation. This all happen every day. This all happen every day, every moment whenever you write a test paper. छोटे से छोटे टेस्ट पेपर से बड़े टेस्ट पेपर तक, these all things are very common. आप कौन से स्कोर कन्वर्ज करोगे, nobody knows. Nobody can think about it. But all I'm saying, be honest and have a very realistic approach and expectation with yourself. If you think that the average of the marks that you have scored over a period of time is 60, maybe you can go for 70, but you cannot go for 100. And if it happens, then that is a miracle. I'm not saying that miracle don't happen. Miracle do happen sometimes. It may possible that sometime later a miracle is going to happen with only 1% of this world. ऐसा हो सकता है. But all I'm saying that what is the generic feeling? What is the generic attitude with respect to exams? That if the average score in the mocks that we have scored so far after writing 30-40 mocks, for an example, is 60, maybe you will be somewhere close to 70, 72, 65 and so on. So your range would be 60 to 70. Of course, you will not come down below 60, but you will definitely be around 60 or maybe above 60, maybe 10 to 20% more than what you are expecting. So try to converge yourself with that realistic approach of expectations. Sometimes people have very unrealistic approach and expectation, and I feel that that is going to be very dangerous because you won't be able to perform with best of your spirit and ability in the exams. Okay, so please have the realistic approach and don't bother about it that I have made only 60-65 marks in the last mock test papers and so on, and that would definitely not give me a guarantee that I will get success in the exams. Do not bring all such things in your mind. Just think about it. Whatever that you are scoring is good. Whatever that you are scoring in the next mark is good. Whatever that you will score in the next to next mark, that will be good. No problem about it. Sleep well. This is the most important element of life. सिर्फ हेल्दी रहना काफी नहीं है ना. फिजिकल हेल्थ आपको दिख रहा है लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए आपको 7 से 8 घंटे सोना है. मैंने 8 घंटे ज्यादा नहीं लिखा है. लोगों को लगता है यार 8 घंटे कैसे सोएंगे. आप बिना सोए काम ही नहीं कर सकते. यू कैनॉट वर्क विदाउट ए गुड स्लीप. 7 to 7.5 hours on an average of 7 hours of sleep is definitely required. 7 to 8 hours of sleep बिल्कुल चाहिए. All of us, every one of us have to fight into our action, and that action cannot be done even if we do not have good sleep. तो ठीक से आपको सोना during the last hours of your preparation is very 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 necessary. हमारा एग्जाम अभी ठंड में है, in the month of December. Obviously कोई ठंडे पानी से नहीं नहा रहा होगा. अब रोज गर्म पानी से नहाओ, थोड़ा ज्यादा नहाओ. यदि आप 2 बाल्टी पानी यूज करो तो 3 बाल्टी पानी यूज करो गर्म. Right? This is the way you are able to divert all such negative emotions. This will definitely help you because when you do it regularly, it becomes a part of your life. Things when become a part of your life, you will be able to engage yourself completely, and that would help you to bring a proper state of mind. तो इसीलिए रोज थोड़ा सा आप इस एक्सरसाइज को करके देखो. जब भी मेरे साथ दिक्कत होती है and I could not sleep well, मॉक बनाने के चक्कर में रात भर चला जाता कई बार. So in that way, that day I used to bath for quite some time, and that gives a lot of relief. So try to do it. It works and it helped me a lot. मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए, है ना. देखो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जब आपने डिसीजन लिया दैट आई एम गोइंग टू गो फॉर क्लैट 2023, आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछा था. तो यदि आज आपको डिफिकल्टी हो रही है, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग योर प्रिपरेशन टू बी इनफ फॉर दिस एग्जाम्स, बट यू फील दैट मैंने कुछ तो पढ़ा है, ठीक पढ़ा है, मे बी आई एम नॉट स्कोरिंग 80, 85, 90 एंड सो ऑन, बट मेरे स्कोर्स कुछ ऐसे है कि मेरे को कॉलेज मिल भी जाएगा. तो ड्यूरिंग दैट सर्कमस्टेंसेस प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स whenever you feel down. Always discuss that this is all that is happening to you. You can do the same thing with your friends. You can also do the same thing with somebody who is very close to you, somebody who is your teacher and you believe on him very strongly. You can discuss the same thing with them also. But do not forget to do it with your parents.
Because when your parents will say now that no problem, you can do it, then that will give lot of resonating energy in your mind, and you can perform grossly in the paper. I'm telling you, that could create nuclear energy in your mind. That is going to be great foundation for yourself. ये जितना भी आपने प्रिपेयर किया ना अभी तक for the last 1 complete year, believe me, this is not just for CLAT. It is a foundation for life. You have crossed a lot of barriers of life. I can tell you that by next time when you go for any preparation, when you go for any decision, when it comes to a competitive exam, writing a competitive exam, I'm 100% sure that this foundation is definitely going to help you. In whatever place you have studied, doesn't matter. If you have properly studied, honestly studied, believe me, this foundation is definitely help you in life. Where you work in any field, whatever field that you choose to work, believe me, this foundation is going to help you. Alright, so always talk to your parents. हमेशा उनसे बात करें, बताएं क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, so that they could give you better solutions. और उनके स्टेटमेंट के ऊपर तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हो. I'm telling you. Now that would give you lot of power, lot of energy. It could empower you to such an extent that you will feel like working morning till night and still you will not be tired. उसमें इतनी एनर्जी हो सकती है ना. तो मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू फ्रेंड्स, जिनमें काफ़ी पॉजिटिव बातें करने की आदत है, उनसे बात करें, टू योर टीचर्स एंड सो ऑन, सो दैट यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट विद इन योर माइंड. ये जो फैक्ट्री है ना बॉडी, इस फैक्ट्री के अंदर कुछ बढ़िया प्रोसेस हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिवली बात करें. जितने भी नेगेटिव, उल्टा है ना, खराब बोलने वाले जो लोग हैं, ट्राई टू डिस्कार्ड देम एज क्विकली एज पॉसिबल राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. और उसके बाद जितना पॉजिटिव हो सकते हैं आप अपने लिए करें, बिकॉज दिस फैक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग ग्रेट. ओके, एंड द लास्ट थिंग जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन दिस पार्ट, current affairs. Believe me, this is the core for the exam during the end of the time. Current affairs, the great section, if you ask me to count during the last 15-20 days of time, and that is current affairs. आप इस पे जबरदस्त फोकस करिए. डू मॉक्स, आप मॉक्स करें, ओके, मॉक्स को रेगुलरली करें, और साथ में उसको एनालाइज भी कर ले, उसी टाइम कर ले, उसी दिन कर ले, उसी मोमेंट पर कर ले. डू नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग देम. जिस वक्त आप मॉक करेंगे, एंड ट्राई टू एनालाइज दोज मॉक्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली. डू नॉट टेक अनदर डे टू गो फॉर your analysis. The analysis has to be done at that moment of time when you are absolutely fresh with your idea that I have made this particular question with this particular idea or principle, and still it went wrong. So if all that happened, then you have to do your analysis at that point of time only. Do not waste your time. उसी वक्त आप कर लें. I believe that this could be one of the ways. Maybe you have even better ways than what I could suggest you right now at this point of time. But I believe divergence is the best solution during the last 15-20 days when you have time for the exams. And during this time, try to connect with more and more positive people whom you think would be your well-wishers, whom you think that could help you during the last 15-20 days of time. And that could create a lot of magic in the paper, isn't it? Ultimately, it is only you who is going to write the paper, alone, lonely. So in that alone environment, you can create yourself to be a family of your own, so that you could be engaged yourself, diverting all such emotions, and be able to do a great performance, right? To try to do all these things, be with yourself and avoid as much as possible all those negative emotions, notions, people around you, so that you could be able to have a very protective environment for the last 15-16 days of your time that you have in hand. मैं सच कहता हूँ, जिन लोगों ने साल भर पढ़ा है, उनको इन 15 दिनों में डरने की आवश्यकता नहीं है. ओके, इफ दे आर ओनली बी एबल टू कंटिन्यू, दे कैन डू ग्रेट. और जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, तो इन 15 दिनों में पॉजिटिव रहने में कोई नुकसान नहीं है. क्या पता, यू कुड गेट ए ग्रेट मिरेकल एट द एंड ऑफ द डे. ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.